Good morning, brothers and sisters, dear friends, learners and listeners. Today it is very nice time, nice place, and nice action of listening with 100% present sense of mind through the truth of science and spirituality. Continuous positive education leads to positive thinking. Continuous positive education leads to positive thinking. Education is reservoir. Positive thinkers are like athletes who, through practice, build an inner reservoir of stamina that they draw on in competition. If they don't practice, they have nothing to draw on. Similarly, positive thinkers regularly build a reserve of positive attitude by constantly feeding their mind on the pure, the powerful, and the positive on a daily basis. They realize that we are all going to be forced and faced with a negative, and if we have the reserve of positive attitude, we will be able to overcome. Otherwise, the negative will prevail. Positive thinkers are not fools and they are not going through life with blinders. They are winners who recognize their imitations. But focus on their strengths. Losers, on the other hand, recognize their strength but focus on their weaknesses. Build a positive self-esteem. What is self-esteem? Self-esteem is the way we feel about ourselves. When we feel good within, our performance goes up. Our relationships improve both at home and work. The world looks nicer. What is the reason? There is a direct correlation between feeling and behavior. How do we build positive self-esteem? If you want to build positive self-esteem quickly, one of the fastest ways is to do something for others who cannot repay you in cash or kind. A few years ago, I started volunteering my time to teach attitude and self-esteem programs to jail inmates. In just a few weeks, I learned more than I had learned in years. After attending my program for 2 weeks, one of the inmates stopped me and said, "Rakesh, I want to talk to you."
I am going to be released from prison in a couple of weeks. I asked him what he learned through the attitude development program. He thought for a while and then said that he felt good about himself. I said, good doesn't tell me anything. Tell me especially what behavior has changed. I believe that learning has not taken place unless behavior changes. He told me he read his Bible every day since I started the program. I then asked him what reading the Bible did it to him. He replied that he felt comfortable with himself and others, which he hadn't felt before. I said, that is nice, but the bottom line is, what are you going to do when you leave jail? He told me he was going to try to be contributing member of society. Then I asked him the same question again, and he gave me the same answer. For the third time, I asked him the same question, what are you going to do when you leave jail? Obviously, I was looking for a different answer. At this point, in angry tone, he said, I am going to be a contributing member of society. I pointed out there was a word of difference in that he said then and what he said now. Earlier, he had said, I am going to try to be, and now I am going to be. The difference is the word try. He got rid of the word trying, and that made sense. Either we do it or we don't. The word trying keeps the door open for him to come back to jail. Another inmate who was listening in our conversation asked, Doctor, what do you get paid to do all this? I told him that the feeling that I just experienced was worth more than all the money in the world. He then asked, why do you come here? I said, I come here for my own selfish reason. And my selfish reason is that I want to make this world a better place you put into the system. You always get back, and most times more than you can ever put in, but you don't put in with the desire to get something back. Another inmate said, what anybody does is their business. When people take drugs, it is none of your business. Why don't you leave them alone? I replied, my friend, even though I disapprove, I'll compromise and accept what you are saying. That is, if you can
guarantee that when someone takes drugs and when they get behind the wheel of the car and have an accident, the only thing they will ever hit is a tree. I'll compromise. But if you cannot guarantee that when they take drugs and have an accident, then you or your kids or I or my kids could be dead under the wheels, you better believe it is my business. I have to get this person off the road. This is one phrase, it is my life. I'll do what I want. Has done more damage than good. People choose to ignore the spirit and derive the meaning that is convenient to them. Such people have tied this phrase to selfishness. These people forget that we don't live in isolation. What you do affects me, and what I do affects you. We are connected. We have to realize that we are sharing this planet. And we must learn to behave responsibly. There are two kinds of people in this world: takers and givers. Takers eat well and givers sleep well. Givers have high self-esteem, a positive attitude, and they serve society. By serving society, I do not mean a run-off, the mill pseudo leader turned politician who served himself pretending to serve others. As human beings, we all have the need to receive and take. But a healthy personality with high self-esteem is one that not only has its need to take but also to give. A man was washing his new car when his neighbor asked him, "When did you get the car?" He replied, "My brother gave it to me." The neighbor's response was, "I wish I had a car like that." The man replied, "You should wish to have a brother like that." The neighbor's wife was listening to the conversation and she interrupted, "I wish I was a brother like that. What a way to go." Stay away from negative influences. Today's teenagers learn from adult behavior and the media. They face peer pressure. Peer pressure is not just limited to teenagers. It is also prevalent in adults. It shows a lack of self-esteem. When people do not have the courage to say no, thank you, and stay away from negative influences. What are the negative influences? Negative people. An eagle's egg was placed in the nest of a prairie chicken. The egg
hatched and the little eagle grew up thinking it was a prairie chicken. The eagle did what the prairie chickens did. It scratched in the dirt for seeds. It clucked and cackled. It never flew more than a few because that is what the prairie chickens did. One day he saw an eagle flying gracefully and majestically in the open sky. He asked the prairie chickens, "What is that beautiful bird?" The chickens replied, "That is an eagle. He is an outstanding bird, but you cannot fly like him because you are just prairie chicken." So the eagle never gave it a second thought, believing that to be the truth. He lived the little life and died a prairie chicken, depriving himself of his heritage because of his lack of vision. What a waste! He was born to win but was conditioned to lose. The same thing is true of most people. The unfortunate part of life is, as Oliver Wendell Holmes said, most people go to their graves with music still in them. We don't achieve excellence because of our own lack of vision. If you want to soar like an eagle, you have to learn the ways of an eagle. If you associate with achievers, you will become one. If you associate with thinkers, you will become one. If you associate with givers, you will become one. If you associate with complainers, you will become one. Whenever people succeed in life, petty people take cracks at them and try to pull them down. When you refuse to fight pretty people, you win. In martial arts, they teach that when someone takes a crack at you, instead of blocking, you should step away. Why? Even to block, you require energy. Why not use it more productively? Similarly, in order to fight petty people, you have to come down to their level. This is what they want, because now you are one of them. Don't let negative people drag you down. Remember, a person's character is not only judged by the company he or she keeps, but also by the company he or she avoids. Smoking, drugs and alcohol. One reason that I don't drink is that I want to know when I am having a good time. Drinking makes a person lose his inhibitions and give exhibitions. In my travels, I have noticed that in some countries, drinking has become a national pastime. If you don't drink, they look at you as if there is something wrong. Their motto is, it doesn't matter how bad your English is, as long as your scotch is good.
If a banker asks them what their liquid assets are, they would bring 2 bottles of scotch. Drinking and smoking are glamorized today. It all starts with the first time. If you ask people why they consume alcohol or take drugs, they'll give you a host of reasons. Eat, drink, and be merry, neither pinch nor other tarry. It is being accepted with everyone, such as to celebrate, to have fun, to forget problems, to relax, to experiment, to impress. It is cool to drink, to be fashionable, to mingle for business purposes. People want to conform to peer pressure. I am amazed at the way peer pressure compels with phrases such as, "Aren't you my friend? One for the road, one for my health." The following poem from an unknown author explains the dilemma of a social drinker well. I have drunk to your health in taverns. I have drunk to your health in my home. I have drunk to your health so damn many times that I haven't almost ruined my own. Drinking and driving cost lives. Drinking and driving cost lives. Harry Johnson, the American Hospital Association reports that half of all hospital admissions are alcohol related. And according to the National Safety Council's 1989 Accident Facts Edition, a person is injured in an alcohol-related crash every 60 seconds. Pornography is nothing short of dehumanizing women and children. The consequences of pornography were that it dehumanizes women, it victimizes children, it destroys marriages, it encourages sexual violence, it makes fun of ethical and moral values, it destroys individuals, families, and communities. A woman is raped in the United States every 46 seconds. National Victim Center or Crime Victims Research and Treatment Center 1992, 86% of rapists admit to regular use of pornography, with 57% admitting imitation of pornography scenes when committing sex crimes. Dr. William Marshall, 1988. It is sad to see how low some people will stoop to make a buck by making pornography their business. What about the sick people who buy it? Negative movies and television programs. Today's kids are learning their attitudes and values more from television and movies than from anywhere else. It is estimated that in the United States, by the time a younger gets out of high school, he has watched more than 20,000 hours of television, witnessed 15,000 murders, and watched 100,000 alcohol-related commercials. They convey the message that drinking is fun, smoking is glamorous,
and drugs are in the thing. No wonder the crime rate is so high. Soap operas glamorize premarital and extramarital sex. No wonder commitments are lacking in relationships and divorce rates are high. Impressionable viewers set their standards and benchmarks based on what they see and hear in the media. And no matter who it is, we are all impressionable to varying degrees. Profanity. Using profanity show a lack of self-control and discipline. Rock music. The lyrics of some hit songs are obscene. We can be subconsciously influenced by the music. We hear the performance we watch. Learn to like the things that need to be done. Some things need to be done whether we like them or not. For example, mothers caring for their young. They may not be fun and games and may even be painful, but if we learn to like the task, the impossible becomes possible. Start by doing what is necessary, then what is possible, and suddenly you are doing the impossible. Saint Francis of Assisi. Start your day with a positive. Read or listen to something positive. First thing in the morning, after a good night's sleep, we are relaxed and our subconscious is receptive. It sets the tone for the day and puts us in the right frame of mind to make every day a positive day. In order to bring about change, we need to make a conscious effort and be committed to make positive thoughts and behavior part of our lives. Practice having positive thoughts and behavior daily until they become a habit. William James of Harvard University said, if you are going to change your life, you need to start immediately and do it flamboyantly. Winners versus losers. The winner is always part of the answer. The loser is always part of the problem. The winner always has a program. The loser always has an excuse. The winner says, let me do it for you. The loser says, that is not my job. The winner sees an answer for every problem. The loser sees a problem for every answer. The winner says, it may be difficult, but it is possible. The loser says, it may be possible, but it is too difficult. When a winner makes a mistake, he says, I was wrong. When a loser makes a mistake, he says, it wasn't my fault. A winner makes commitments. A loser makes promises. Winners have dreams. Losers have schemes. Winners say, I must do it something. I must do something. Losers say, something must be done. Winners are a part of the team. Losers are a part of the team. Winners are a part of the team. Losers are apart from the team. Losers see the gain.
Winners, sorry, winners see the gain, losers see the pain. Winners are possibilities. Winners see possibilities, losers see problems. Winners believe in win or win. To win, someone has to lose. Winners see the potential, losers see the past. Winners are like a thermostat, losers are like thermometers. Winners choose what they say, losers say what they choose. Winners use hard arguments but soft words. Losers use soft arguments but hard words. Winners stand firm on values but compromise on petty things. Losers stand firm on petty things but compromise on values. Winners follow the philosophy of empathy. Don't do to others what you would not want them to do to you. Losers follow the philosophy, do it to others before they do it to you. Winners, losers left it happen. Winners make it happen, losers let it happen. Winners plan and prepare to win. The key word is preparation. Be a Let me close this chapter with the 8 action steps discussed earlier. Be a good finder. Make a habit of doing it now. Develop an attitude of gratitude. Get into a continuous education program. Build positive self-esteem. Stay away from negative influences. Learn to like the things that need to be done. Start your day with a positive. How a man can bring change? By going through the autobiographies of our forefathers, foreteller, forecasters, those who came first on this land. How did they start their mission for spreading out the message of oneness, equality, brotherhood, humility, humanity? They came on this land for the welfare of our society and nation. How did they not care the obstacles, hindrances, problems, whatsoever came in their lifetime? They didn't care because they came as an sacrificial body. They came to devote and dedicate themselves for the others. It was their true aim of life. And we have learned that our nation is the nation of beginners, starters and initiators. And our Indian land is known as multidimensional, multi-sided, multifaceted. And we have the unique feature in the world, unity in diversity. At every level, at every scale, we have adversities, varieties, diversities, but we have uniqueness, incomparability, by having the greatest and the most highest spiritual standard of our nation. Why our nation is known as the greatest and superb spiritual nationalistic nation of the world? धूमधाम से अनामी पुरुष आए, शाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी, संवत विक्रमी 1957, सावन महीने की पूर्णिमा मुताबिक 12 अगस्त 1897 ईस्वी को शाम 7 बजे पवित्र इंसानी जामा पहनकर मृतलोक की सैर आरंभ की।
आप जी गांव कोटड़ा, तहसील गंदे, जिला क्लात, नज़दीक नौताल रेलवे स्टेशन, बलोचिस्तान प्रांत जो वर्तमान पाकिस्तान में है, में एक परम पूजनीय प्रतिष्ठित हिंदू क्षत्रिय राजपूत परिवार में प्रकट हुए। पूजनीय परम भक्त श्री पिल्लामल जी अर्थात आदरणीय पिताजी और पूजनीय परम भक्त श्रीमती तुलसाबाई जी अर्थात आदरणीय माता जी ने बचपन में आप जी को अर्थात परम पूजनीय सतगुरु जी श्री खेमामल जी के नाम से पुकारा। आप जी की बचपन से ही हर बात न्यारी व निराली थी। मृतलोक में शाम 7 बजे देह स्वरूप प्रकट होते ही कमरा एकदम चुंदला देने वाले प्रकाश से भर गया। अनगिनत न्यारी बातों में से बचपन से ही सत्यनारायण की करामातें और अनेक करामातें होती रहती। जिस पीर दरवेश महात्मा गुरु से मिले उसकी अंदरूनी स्थिति का पहले ही पता चल जाता और फकीर और गुरु उपदेश करने की बजाय उपदेश लेकर चले जाते, यानी ये गुरु चेले बन जाते। खेलते हुए बच्चों को मिठाई की झोलियां भर देते। अक्सर साधु महात्मा आते और अच्छी बातें सुनकर पेट भर मिठाई खाते। पूजनीय परम भक्त माताजी ने खोए की मिठाई बनाकर बाजार में बेचने को दी तो वो साधुओं को ही खिला दी। में जमींदार के पास सारा दिन कठिन परिश्रम किया। जिमीदार छोटी आयु में कठिन परिश्रम का कौतुक देखकर हैरान हो गया और आप जी से रूहानियत की बातें सुनकर हैरत या अचंभे में पड़ गया। घर तक आया और पूजनीय परम भक्त माता जी को बोला कि आपके घर में बालक नहीं प्रभु अर्थात नियारा राम आए हैं। बोरी में 10-15 सेर अनाज देना चाहा पर पूजनीय परम भक्त माता जी ने मना कर दिया। पूरे गुरु की तलाश, परमेश्वर और पूरे गुरु की तलाश में रात को धार्मिक स्थानों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि की तरफ भी चले जाते और 3-3 मील तक रास्ता झाड़ू से साफ करते ताकि किसी को कंडा अर्थात कांटे और कंकर आदि न लगे। और फिर
नंगे पांव पैदल चलकर देखते। सुबह होने से पहले ही जब लोग घरों से निकलते, आप जी वापस आ जाते ताकि किसी को मालूम भी न पड़े कि ये काम। गर्मियों में आप जी बचपन के घड़े कंधों पर उठाकर टिब्बों के रास्ते, जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता था, ले जाते और मेहनत करके चने और या बेर लेकर रखते और आते जाते भूखे प्यासे मुसाफिरों को ज़रूरत के समय देते। लेकिन पूरा गुरु मिलने के बाद आप जी ने किसी तरह की बाहरमुखी धार्मिक और सामाजिक सेवा न की और न ही करने को किसी को कहा, बल्कि बाद में जीवों को किसी तरह की बाहरमुखी धार्मिक और सामाजिक सेवा करने की सख्त मनाही करते और जीवन के अमूल्य समय को अपने शरीर के अंदर सतगुरु और परमेश्वर खोजने में लगाने के लिए समझाते। आप जी समझाते कि बाहर की अहंकार पैदा करती है और काल या 84 के चक्कर से निकलने नहीं देती। आप जी आजीवन हक हलाल की कमाई से स्वयं कमाया हुआ साधारण व शुद्ध शाकाहारी भोजन दिन में केवल एक बार ही करते। आप जी ने कभी किसी से कोई उपहार और दान, रुपया या वस्तु आदि स्वीकार नहीं किया, बल्कि आप सत्संग आदि में प्राय ऐलान करते कि अगर किसी ने 1 रुपया दिया हो तो अभी 1 लाख रुपया ले। लेकिन कभी कोई लेने सामने नहीं आया। हम जीवों को सिखाने के लिए मृतलोक में इंसान को पूर्ण गुरु धारण करना बेहद जरूरी है। को बखूबी क्रियान्वित कर दिखाया और पूरे गुरु की तलाश में जगह जगह गिरनार, तपोवन आदि जगह 9 साल तक घूमे। बलूचिस्तान में ये मशहूर था कि माँ ने एक लाल जन्मा जिसकी आंख में नींद ही नहीं। इन 9 सालों के दौरान आप जी ने पवित्र आंखें बंद न की, अर्थात सोए ही नहीं, ताकि वो फकीर जो पहले मिला था और सपने में आया था कहीं फिर दोबारा आए और आकर चला न जाए। जब पवित्र इंसानी जामे में आए 22-23 वर्ष हुए थे तो वहीं रूहानी फकीर यानी परम संत सावन शाह से मेल हुआ। 9 सालों के दौरान आप जी कई महात्माओं से मिले और उनके वचनों या मंत्रों को 3-3, 4-4 महीना कमाया, अर्थात पूरी मेहनत व लगन से अमली जीवन में लाए और पाया कि मंत्र की ताकत या सिद्धि हासिल थी, इसलिए महात्मा को छोड़ा।
कठिन मेहनत और मन नफ्स के साथ मुकाबला, कठिन मेहनत और मन नफ्स के साथ मुकाबला करना और फिर जीतना सिखाया। सतगुरु और परमेश्वर की याद में रात दिन जागते और मन को मिनट भर भी चैन न लेने देते थे। रात को नींद फिटाने व मन को भजन सिमरन में लगाए रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते। जैसे आप जी सारी सारी रात घूमते रहते और सिमरन करते रहते। कई दफा ऊंट लेकर सारी रात सफर करते रहते। रात को दूसरे गांवों के शमशान या कब्रिस्तान चले जाते। मन नींद करने की इच्छा करता तो कस्सी लेकर मिट्टी खोदने लग जाते। खुद अपने पवित्र हाथों से ईंट बनाते, खुद ही चिनाई करते, किसी मकान को बनाने या गिराने में लगे रहते। बड़े खड्डे में तूड़ी या मिट्टी का गारा बनाकर सर्दी के मौसम में सारी रात उसकी लताड़ते रहते। एकांत के लिए एक दफा आप जी ने ढींगर यानी छापे से एक गुफा बनाई और आगे एक लंबा बरामदा बनाया जो कि इतना नीचा और तंग था कि आप जी खुद मुश्किल से उस गुफा तक पहुंचते थे और किसी और आदमी की हिम्मत वहां तक पहुंचने की न थी। लगभग 12 फुट ऊंची बुर्जी बनाई जिस पर सिर्फ बैठा जा सकता था। ऊंची लकड़ी की सीढ़ी लेकर रात को चढ़ जाते और पवित्र सारी रात बुर्ज के ऊपर भजन सिमरन करते रहते। थोड़ा सा नींद का झोंका आने से नीचे गिरने का खतरा था। सुबह जब कोई मुसाफिर वहां से निकलता तो उसे सीढ़ी लगाने के लिए बोलते और नीचे उतर आते। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। एक बार आप जी ने एक पेटी बनाई जिसके चारों तरफ कील लगाए। इसमें आप जी मुश्किल से बैठ सकते थे और जैसे ही नींद आए तो कील चुभ जाए और आगे दरवाज़ा बंद करने पर बाहर से न रोशनी और न ही आवाज़ जा सकती थी। कई बार सलगम घिया आदि की उबालकर उसका गुदा निकालकर सिर्फ पानी यानी रसा जिसमें सिर्फ नमक था पीकर मन नफ्स पर डंडा चलाना सिखाया। कई कई दिन आप जी कुछ भी न खाते और कई कई दिन गुफा से बाहर भी न जाते। आप जी से हमेशा दूर रहे। परम संतों के कहने से ही पूजनीय परम भक्त माता जी से मिले। पूजनीय परम भक्त सुपुत्र जी को भी आप कभी अपने नजदीक न आने देते। पूजनीय परम भक्त बड़े से भी 1959 में यानी 20 साल बाद ही मिले। 20 साल तक किसी बीवी लड़की या औरत की शक्ल तक न देखी। 9 साल लेटकर एक पल भी आराम न किया। खड़े खड़े या बैठे बैठे पवित्र शरीर को आराम दे देते। आप जी को रात को कभी सोते नहीं देखा और न ही सेवादारों को सोने देते ताकि वे परमेश्वर के
भजन और सिमरन में लगे रहें। जब मन भजन सिमरन के लिए आलस करता या नींद करना चाहता तो उसको सजा देने के लिए आप जी किसी नहर के पास चले जाते और ठंडे पानी में खड़े होकर भजन सिमरन किया करते। आप जी फरमाते कि 30 साल इस अर्थात पवित्र तन को बाढ़या अर्थात कठिन तपस्या किया। हम भूले भटके जीवों को सिखलाने के लिए ही आप जी ने ये सब सख्त मेहनत मन, नफ्स और 5 चोरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ाई व मुकाबला करके दिखाया और जितना सिखाया सख्त मेहनत करके समझाया कि अंदर परमेश्वर और सतगुरु को पाना सरल या आसान नहीं है और सख्त मेहनत करने वह परमेश्वर और सतगुरु की याद और भजन में सदा लगे रहने के लिए समझाया। गुरु भक्ति और मुर्शिद परस्ती अनामी पुरुष शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी की पवित्र जुबान पर हमेशा मुर्शिद और सतगुरु का नाम रहा और हर काम, हर चीज़, हर जगह और बिल्डिंगें, भंडारे आदि मुर्शिद के नाम पर ही किए। वो सड़क या रेलगाड़ी जिस पर कभी कभी परम संत सफ़र करते थे, आप जी सिजदा करते। जिला सिरसा में जहाँ जहाँ परम संत कभी रुके, जिले सिरसा में जहाँ जहाँ परम संत कभी रुके थे, आप जी ने वहाँ नूरी डेरे बनाए। कोई भी बात जो दुनियावी या शारीरिक तौर पर परम संत जी से मेल खाती यानी मिलती थी, वो कभी न होने दी ताकि बराबरी न लगे। आप जी ने अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, जबान या भाषा, देश, परिवार और खानदान, जात, मित्र और समाज, धर्म और पंथ आदि सब कुछ मुर्शिद पर या मुर्शिद के हुक्म पर कुर्बान या न्यौछावर अपना अर्थात पारिवारिक नाम और जात त्याग कर मुर्शिद के दिए नाम को अपना लिया। पारिवारिक नाम न किसी को बताया, न पता लगने दिया, बल्कि मुर्शिद के दिए नाम से ही याद करने को फरमाया। आप जी ने अपनी जन्म तिथि कभी किसी को नहीं बताई ताकि कोई समारोह और उत्सव या भंडारा न मना सके, बल्कि मुर्शिद के साथ इस मृत लोक में मिलाप के दिन अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा को ही भंडारे के रूप में मनाया और मनाते रहे। मुर्शिद के हुक्म से अपना धर्म और पंथ छोड़ा, यानी सत्यनारायण की पूजा ही नहीं छोड़ी, बल्कि मुर्शिद के हुक्म से मूर्ति को तोड़कर उनके पास ले आए। मुर्शिद के हुक्म से ही अपना जन्म स्थान व परिवार और खानदान, मित्र और समाज व देश छोड़कर सिरसा में आ गए। अपनी जबान या भाषा बलोची और सिंधी त्याग कर मुर्शिद की जबान पंजाबी और हिंदी धारण की। सारांश में सब कुछ मुर्शिद के एक इशारे पर ही कुर्बान या न्यौछावर कर दिया।
आप जी किसी को भी मुर्शिद को सरदार जी, गुरु, हजूर महाराज या आधे नाम से बोलना बर्दाश्त न करते थे और न ही किसी तरह की नीवी या तुच्छ बात मुर्शिद के बारे में सहन करते। मुर्शिद के खानदान वालों को भक्त कहकर पुकारते, उनकी बहुत इज्जत करते और करवाते और फरमाते, जो इनकी निंदा करेंगे या पीठ दिखाएंगे वे नरकों में जाएंगे। बलोचिस्तान में 9 डेरे बनाकर परम संत जी पर न्यौछावर कर दिए और ये सत्संग घर बन गए। पूजनीय परम भक्त माता जी ने 2 मकान जो आप जी के और पूजनीय परम भक्त सुपुत्र जी के नाम लगाए थे, आप जी ने दोनों बेचकर परम संत जी के डेरे में लगा दिए। 1930 व 40 के दशक में बलोचिस्तान के लोगों, जिसमें ज़्यादातर कट्टर मुसलमान थे, को दीनता से व अनगिनत करामातें या कौतुक दिखाकर उनके मन को बदला। सच्ची रूहानियत या आध्यात्मिकता में लगाकर अपने शरीर के अंदर मालिक खोजने में लगाया और मुर्शिद के डेरे ले जाकर नाम या कलमा दिलवाया। बलोचिस्तान के पीर जो वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचारक व मुखिया था, को भी झुकाकर मुर्शिद के डेरे में कलमा दिलवाया। फिर पश्चिमी पंजाब व सिंध प्रांतों के लोगों, जो कि ज़्यादातर इस्लाम, सिख पंथ, आर्य समाज आदि के कट्टर अनुयायी थे, के मन को झुकाकर सत्संगी बनाया। ये अनगिनत कौतुक दिखाना वह सब लोगों के मन को झुकाना खुद आप जी ने ही किया, पर अपने आप को छुपाकर हमेशा मुर्शिद का नाम ही लिया। शुरू में कठिन से कठिन 8-10 आदमियों के बराबर सेवा परम संत के डेरे में की। किसी ने परम संत जी के डेरे की निंदा की तो फरमाए, खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी बोला मुर्शिद के डेरे के बारे में कोई अपशब्द कभी सहन न करते, बल्कि मुर्शिद के डेरे की परम संत जी के चोला छोड़ने के दौरान वह बाद में पूरी तरह शब्द रूप में संभाल की। यह सारा इश्क यानी गुरु भक्ति और मुर्शिद परस्ती जो पवित्र इंसानी जामा में की, वह हम जीवों को समझाने के लिए ही था। दीनता और नम्रता। आप जी दीनता और नम्रता के अथाह समुद्र थे। जो जीव या प्रेमी और सेवादार आदि हाथ जोड़ता, उसको डेरे से बाहर निकाल देते। एक ब्रह्म कहलाने वाले साधु ने अपशब्द कहे और निंदा की। जब प्रेमी ने बताया तो शामस्ताना बलोचिस्तानी जी इसरार फरमाए, जाने दे गाली लगती ही नहीं। असी तो उस देश के हैं जहाँ दिन है न रात, जहाँ माँ है न बहन, जहाँ टट्टी है न पेशाब। गाली तो उससे लगे जिसकी माँ बहन हो। जाओ उसको 100 रुपये और मिठाई देकर आओ और कहो कि खूब गाली कढ़। अर्थात जिसने निंदा की वो बाद में प्रेमी बन गए। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने कभी भी अपने को गुरु या संत नहीं कहलवाया, बल्कि सेवाधारी, जोड़े झाड़ने वाला व गरीब फकीर कहलवाया। हाथ जोड़ना, पवित्र चरणों को हाथ लगाना और मत्था टेकना सख्त मना था। हजूर महाराज व बाबा जी कहने के लिए रोका,
बाहर के कर्मकांड, नित्य प्रेम या नित्य नियम, शरीयत, व्रत व जड़ पूजा से ऊपर उठकर सतगुरु और परमेश्वर को परम प्रेम भक्ति करके अपने शरीर रूपी मंदिर में खोजने की शिक्षा दी। जिंदा राम को हर वक्त हर जगह हाजिर नाजिर समझकर उसकी शरण पक्की करके और उसकी दया मेहर से अलौकिक इश्क के घोड़े पर चढ़कर अपने शरीर रूपी मंदिर में सतगुरु और जिंदा राम से मिलो। इस मृत लोक या नाशवान संसार से सैर की समाप्ति के 2 दिन पूर्व अर्थात 16/4/1960 को पवित्र वचन लिखाए, जो एक तरह से आप जी का आखिरी अनमोल वचन है और आप जी के नूरी चरणों में पहुंचने का सूचक है। प्रेम रूप में गुलबहार, युगों युग से दोनों जहान का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। प्रेम रूप सतगुरु युगों युग से हर जीव के अंदर 2 आंखों के बीच विराजमान है। जो दोनों जहानों में सच्चा साथी है, उसे अलौकिक या हकीकी प्रेम करके ही खुश किया जा सकता है। तब वो आत्मिक गुलबहारें व दोनों जहानों की खुशियाँ पाता है। Thank you, listeners. It is an autobiography of the first starter, beginner, initiator of the true business or true bargain, which was totally and purely 100% based on the spirituality, where there was no discrimination on the basis of caste, color, creed, sex, language and all that, but everyone was accepted and treated as oneness, equality. So it is the great message that spreaded out by the spiritual father, बेप्रवाह शहनशाहों के शहनशाह श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा।